So you can tell me anything that you want. I hope you guys are familiar with Zoom. If you guys are familiar with Zoom or not, you can write it in the chat box, and I will get to know any kind of query that you guys have. So while the session is going on, you can put in your queries in the chat box, and I will be taking up the queries there. Okay. So we will give a couple of more minutes for people to join in, and then we can start off our session. All right. So settle in, guys, and it is going to be an interesting session. So by the end of it, you will have something to for yourself. Okay. All right. Hopefully, I'm audible to all of you. You guys can drop in a message in the chat box right over here. I'm sending a hi in the chat box. So, all right. Thank you, Neha. Cool. So we will wait for more people to join in. I don't want anyone to miss this session out. And we will start talking about very interesting thing that we have out there. All right. So sit tight for the ride. All right, guys. So if you have a friend who was supposed to join and haven't joined in, do ping them and ask them to join in because we are going to start off our session in a moment. Okay. I hope you guys are free from college now. You are all set to learn something new today. And this is not a, this is kind of an experience that you're going to have. It is not a learning process. We won't tag it as learning. This is more of a this is more of a things that you will be doing if you go ahead and work on the web development or full stack, how those stuff work. All right. Okay. So without any further delay, we shall begin. So let me share the screen. I hope you guys are familiar with Zoom. So what I'll be showing you is we'll be sharing different screens throughout the session. I will be taking you to the code page. I will be showing you how we code whenever we are on an online session. Then we will be switching the pages in between. So you will have a full-fledged experience of how a demo class, how a class, full stack class happens for CipherSchools. All right, so let's begin. And let me ask you a question. How many of you have heard or have thought of becoming a developer? So we have around 10 to 12 people. You can answer in the chat box, right? Pretty interesting field. So when I started as a web developer, I was also very excited. And I said I wanted to be a web developer. I always said that I wanted to be a web developer. Okay. With time, I got to understand that web developer and software developer are two different things. I was at that level. I was such a novice when I started, and I'm talking about like 6 to 7 years back. Okay. And at that point of time, I started researching, I started learning, and the resources that I found was all
there were resources. Obviously, internet is always there, and you are you are one click away from any kind of information. But it is also scattered. It is also scattered out there that it it was such a trouble for me to understand how things work, how to get things going. Because college में I was able to understand the concepts, I was able to get the fundamentals क्योंकि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर वैसा होता है. बट प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा हमें खुद से करना पड़ता है, राइट? ओके, सो when I started researching, मेरे को अगर मैं 5 घंटे के लिए डिवोट कर रहा हूँ my learning time throughout the day, 5 घंटे में से 2 घंटे मेरे को चीजें इकट्ठे करने में लग जाता था कि अच्छा ये यहाँ से ये पढ़ लूंगा, यहाँ से ये पढ़ लूंगा, from this side I'll see this. All this became a kind of an issue for me, and uh, even though I learned a lot, but I could have learned a lot more in that given time. Okay. So with the time, we saw that, okay, there is this thing that we can actually make it happen when a student gets to get that information in one particular place, and that one particular place will save me much of the time. And if I had someone to tell me about it, it would have been much, much better. Okay. So my journey started like that. With time, with the evolution of education in India and everything, चीजें और better होती जा रही हैं. And you guys are in that part of the transition, which is a very good transition at the moment. And आप सबको ही पता है कि कितना बुरा हाल है with the coronavirus state out there. And that has given rise to the need of these kind of programs where a student can get a mentorship, or a student can apply for something where he or she can get the knowledge in one place. Okay, one stop solution is the need of the hour. So this is what we are here for. And to give you a feel of it, I will tell you a story, and then we will dive down into the details of the stack and what this particular session is all about. Then we will have a demo coding where we will be talking. Obviously, since this is a demo class, we won't be able to give you the exact and won't be able to explain the fundamentals, go deep into the concepts that we will be using, but you will have a fair amount of idea of how things work. And let me uh, let me assure you this thing that this session will obviously give you something, a kind of a small project also. Okay? Even though you know about the stuff, you don't know about the stuff, you will have that thing, and it is pretty interesting. Okay, by the end of it. तो जैसे मैं बोल रहा था, when I started web developer, I always said that I wanted to be web developer. I wanted to be a web developer. So when I came out of the college and when I started talking about web development, people were asking, are you good at design? Are you good at CSS? Are you good at presentation? I was like, why would you need all these skills? Web development, isn't it making the whole website? There, my idea of web development and full stack development got cleared. So I was under the consideration that web development is equal to full stack development. It is not. The main thing is web development is only for the part where your user interacts with the browser, और जब भी आप कोई चीज अपने वेब ब्राउजर में टाइप करते हो, that becomes your whatever interaction you are doing with the page that is loaded on the web browser, that वो डिजाइन, उसमें क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं, कैसा यूजर इंटरेक्शन हो रहा है, that is all the part of your web development. Now, web development is a very good branch where people who are more creative, people who have the knack for design, they like to change the feel of a page, they like to make the user experience better. उसके लिए web development बहुत अच्छा है. It is a high paying job as well. There is a lot of requirement of web development, and it deals with the front end. और best part है कि you can work remotely. कि remotely work आजकल तो कंपनियों को देना ही पड़ रहा है because of the situation that we have there. But even if the situation was not there,
there were a lot of freelancers. आप आराम से कहीं पे भी बैठ के आप काम कर सकते हो. You can work anywhere, wherever you find peace, wherever you feel like you will have more motivation. You can work like that, and your efficiency increases. The second part is the full stack. Now, what is the full stack? Full stack is something which actually takes in account everything from the user who is coming to my page to the part that how that user is interacting and how I'm supposed to give that user what he or she wants. Okay. So full stack comes with three different layers. First one is the front end layer. Second one is the back end layer. And the third one is the database layer. Okay. Now, all these things, keeping in all these things in mind, you would also logically, you will also consider this thought that if I know about full stack, won't I have more opportunity than just knowing one kind of layer from that whole full stack? तो आप web development में बहुत अच्छे हो and you are getting paid well and you are having the knack of it, you are interested, you have your choices. Now, if you increase the knowledge, if you enhance the skill, if you learn more stuff, that how complete web development works. Any company, if you go out there, if a person knows only front end and if a person knows front end, back end, and database, whom do you think the company will prefer? You have the answer yourself, right? The company will always look for a person who knows the end-to-end product or who is capable of understanding how the complete data flow works. Right? I hope I'm clear to all of you. आपको समझ में आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? कोई क्वेश्चन है इस पे तो आप मेरे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं and I will answer those questions. तो this is all about full stack development. Full stack development में 3 लेयर्स होती है. अब with modern web development, क्योंकि अगर मैं 1990s में होता और मैं full stack development करता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इशू होता क्योंकि I had to write every single thing on my own. With the modern web development, what has happened is we have got a lot of libraries, we have got a lot of frameworks which helps us to achieve a certain task in a much shorter way than what it was like a couple of years back or maybe 5 years back or 10 years back. So with time, everything is getting developed, everything is getting better. So our stack that we are handling is called Mern stack. Now this Mern stack is basically your frameworks, accumulation of frameworks, which will help us to completely create a website. ठीक है? इसके लिए हमें फंडामेंटल्स जानना बहुत जरूरी है क्योंकि फंडामेंटल्स पे ही ये सारा स्टैक काम करेगा. So let's go deep down and see what this Mern stack is. I hope you can see my screen. You guys are able to see the screen. Right now it's a blue screen. Yes, okay, cool. All right, so let's see what is Mern first. So it is a acronym for MongoDB, Express, React, and Node. So there are these many technologies that we are going to work on. And all these technologies, as I said, is kind of a framework, is kind of a library that helps us to create a full stack from front end to back end to database. So I will quickly skim through this website because if I talk about each and every details, it is going to take me a lot of time. I don't want to. So these things happen a lot in the live session. Shanmugh, again on mute. Can you mute yourself? Thank you. So these are the things. Online sessions में ये सारी चीजें होती हैं. So we will go past that and continue on what Mern stack is. तो Mern stack में जैसे मैंने बोला कि front end, back end and database है.
तो इसमें जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है दैट विल बी हैंडल्ड बाय रिएक्ट, जो बैक एंड वाला पार्ट है विल बी हैंडल्ड बाय नोड एंड एक्सप्रेस, and जो database वाला part है that will be handled by MongoDB. Okay, so this will help us create a complete website of our own. Okay, so let's understand the benefit of Monstack. So as I said, these are all written on a fundamental foundation of JavaScript. JavaScript is the main language that we all need to know. अगर हमें JavaScript आती है हम ये पूरा stack समझ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है? Since this is JavaScript all the way, client side, server side, we will talk in details what client side and server side means. But basically, client side is something that you see on the web browser. So, any web browser will be your client. और जो भी backend में जो भी processing चलती है, that becomes your server side. So, it is like a client side creation also can be done using Monstack. Server side creation can be also done by Monstack. And we have this highly efficient web application that comes out of it. तो हम बहुत efficient code लिखते हैं, उस code के through हमारा website भी perform बहुत बढ़िया करता है. So these are the benefits of Monstack. So quickly we'll go through the concepts of MongoDB and Express, React, and Node. So basically the MongoDB that we have over here is a NoSQL database, a cross-platform database. And we will not go down and see what this actual meaning is. थोड़ा सा high level पे मैं बता देता हूँ कि ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसके वजह से हम जावास्क्रिप्ट का जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है वो डेटाबेस पे भी लगा सकते हैं. हमारे पुराने या रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं जो आपने कभी अगर यूज किया है तो that is fast, it will be it will be fast, it will be scalable, it will be having a lot of JavaScript uses around it, schema. ये सारे technical terms हम लोग details में पढ़ेंगे when we go and start off our course here. And it is very simple to set up. Okay, now I'll go to the next slide quickly and show you that who are the companies that uses this MongoDB. Okay, so I'll play this. You will see the companies that are there in the MongoDB right now uses the MongoDB, and look at the names you see over here. Pretty big names, right? बहुत बड़ी बड़ी कंपनी MongoDB यूज करती है. तो ये MongoDB का जो यूसेज है विद टाइम बढ़ते जा रहा है. And Uber, Lyft, Code Academy, Facebook, Google, they all use MongoDB. It's not that they just use MongoDB, क्योंकि जब आप समझोगे full stack कैसे काम करता है तो we are not supposed to only use one. We can use as many databases, as many backends for one single. I would request people to just take care if you are muted. All right, so that would help us. Thank you. So this is about MongoDB. Express is kind of a framework. I will not go in details of Express, how Express works, but I'll give you an overview over here. So it is a backend web application framework. इसका usage क्या है? What is asynchronous? What is single thread? What is fast and scalable? Fast and scalable you would understand, but asynchronous and single thread is more into kind of details of JavaScript. But to give you in a very layman term, it is like कि हमारा काम चलता रहेगा, हमारा कोड नहीं रुकेगा. Okay, and Node.js जो हमारा backend का environment है उस पे ये काम करता है. Okay, तो हमारे राउटिंग, हम किस पेज पे जा रहे हैं, उस पेज पे क्या काम होगा, all this will be handled by our Express.js. So let's see कौन सी कंपनीज Express.js यूज करती हैं. So it is a 1270 companies according to a Stack Exchange survey that we found, and you can see a lot of companies are using Express framework, and इसमें से काफी नाम आपने सुना होगा. और Monstack, Twitter जो सबसे बड़ा नाम है, uses Express in their tech stack. So you can see how big companies are adapting all these terminologies. Now let's come to the biggest player of the game, that is React. React ने बहुत traction gain किया है
over a year, over the past 2 or 3 years, and biggest of biggest companies are using React. Okay, Netflix आप जानते होगे, Netflix uses React. So let me show you the list. You have Instagram using React, Facebook using React, Airbnb, Uber, Lyft, Snapchat, Reddit. All these companies are using React. Yahoo, everything is using React because React has become so popular right now that because of its efficiency and how things work, all these things has become very, very efficient for their companies. So this is the React part. Now we will talk about Node.js part. Now Node.js is nothing but a kind of environment. तो हमारा पहले जब जावास्क्रिप्ट आया था तो क्या हुआ था कि हमारे फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट ही लिख पाते थे हम, बैक एंड में हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ती थी, जैसे कि जावा हो गया, पीएचपी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया. वी यूज टू क्रिएट बैकएंड्स यूजिंग ऑल दोज टेक्नोलॉजीज. तो हमें शिफ्ट करना पड़ता था फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज टू a different language or different programming language altogether. With Node.js, what happened is we were able to write JavaScript for the backend as well. So as you can read, it is a cross-platform JavaScript runtime environment. So this provides an environment to our system जहाँ पे हम अपने JavaScript लिख सकते हैं. तो the best part about Node.js is it is an open source community. एंड ओपन सोर्स कम्युनिटी से फायदा ये होता है कि हमारा बहुत सारा रिक्वायरमेंट एक सिंगल इंपोर्ट से हो जाता है, एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद Node.js. Right? It is very interesting how Node.js works, and it has a huge library. एंड दैट ह्यूज लाइब्रेरी में से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमें वो सारी चीजें मिल जाती है, एंड वी कैन फोकस ऑन क्रिएटिंग आवर फंक्शनैलिटी रादर देन राइटिंग द कोड अराउंड इट. ठीक है, तो हमारा टाइम फ्रेम भी बहुत कम हो जाता है, हम बहुत जल्दी चीजें सीखना शुरू कर जाते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मर्न स्टैक दैट वी हैव. सो आई थिंक दिस इज the full overview of Mern stack, and this will make you a full stack developer. आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेब डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, डेटाबेस इंजीनियर, देयर आर 3 डिफरेंट रोल्स. तो अब जब आप रोल्स पे रिसर्च करोगे, you will have a better clarity कि आपको करना क्या है. Correct? Any doubts? Are you able to understand how things work when we talk about any kind of development, full stack development? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. Otherwise, what we will do is we will go ahead and start creating something. We will quickly start creating something, and you will see what we are going to create in a moment. I hope no. Then I will skip through a couple of websites. So these are the learning objectives that we will be having. We will be doing all this stuff. We will be creating the APIs, backend, front end, and deployment. So let's see an example. Okay. Let's see an example. So I will be sharing a different screen now. And this screen is going to be our workspace where we are going to write a lot of code. Okay. And things are going to get interesting now. बातें तो बहुत कर ली, अब थोड़ा सा काम करके दिखाते हैं कि कैसे काम करता है. So as you know, these are a very big technology stack that we will be working on. Let us start with how things work. Let us start with basic first. So what you see over here is a development environment. ये मेरे को help करेगा develop करने में. I will not be going and telling you how to install this because we will be covering all that stuff when we start off our very first batch. But at this point of time, I'm going to create our very first index.html. So you must have an idea of what I'm going to do. I'm going to create some HTML. I'm going to use some CSS, which are the basics of any front end. तो अभी हम सिर्फ front end के बारे में discuss करेंगे. We will create a basic front end जो कि आप कभी भी कहीं भी बना सकते हो using anything. So what are we going to do? What are we going to start off with? तो इसके लिए
what I'll do is I will open something. We will, let me share the screen with you. In a second. Cool. So we'll go back to the previous screen. You see what is happening over here. We have a Google page. So what we are going to do is इस पेज को यूज करके हम खुद एक अपना एक प्रोजेक्ट छोटा सा HTML CSS का प्रोजेक्ट देखते हैं कैसे होता है and how things work in our classes, in online classes, and hope this gives you an idea of how things work in our Cypher school. So as you can see, ये एक पेज है. Now it's a very good practice that we have. We usually practice for a front-end developer. They usually clone a lot of websites. They don't have to actually post it or use those design. They can do it for practice purposes, right? So what we are going to do is we are going to target Google, जो उसका होम पेज है, और इसको हम डिजाइन करते हैं. तो जब भी आप डिजाइन करते हो, we need to understand how things can be broken up, right? So उसके लिए I'm going to use some markers on this page so that you understand how things work. So when I'm trying to design anything, I will plan first, right? I will go ahead and see, okay, क्या requirements हो सकते हैं. हम सीधे जाके code करना शुरू नहीं कर सकते, because designing is the most important aspect of any web development. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो there is section, this section where we have certain, okay, not this. Let me use another drawing tool, which is this, which is more transparent. Yep. So as you can see, there is a section where we have certain stuff, and inside this we have this Gmail, and then we have this image, then we have this small grid kind of a box, and then we have the user details. Okay, so we have these three things on the top. Then there is complete white page, uske center pe ek Google ka logo hai. And then we have a search bar, which has a couple of things inside it. So one such thing is your magnifying glass, जो search के लिए user को help करेगा कि समझाने में. And then we also have a feature जहाँ पे आप microphone use कर सकते हो. And then what I see is there are a couple of buttons over here that we have. Let's highlight that. हम लोग अभी के लिए इतना ही देखते हैं. And then we have this footer thing at the bottom. Right, there are a couple of things called advertising business India, about how search happens. So at this point of time, maybe you might not be aware of HTML or CSS, but आप ये logically सोच सकते हो ना, you can logically understand that how these things work, right? Are you able to visualize कि कैसे हम किसी भी चीज को टारगेट करते हैं? हमने डिजाइन कर लिया, हमने देखा अच्छा चलो मेरे पास 3-4 आइटम्स हैं ऑन द टॉप, उसको हम लिस्ट आइटम में बना लेंगे. सेंटर पे एक इमेज जैसा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. प्रॉब्ली गूगल इज नॉट यूजिंग एन इमेज, बट हम लोग सिर्फ HTML और CSS यूज करने वाले हैं, सो वी विल बी यूजिंग दैट. Maybe we can use the image of a user instead of your particular image, or you can use your particular image for that matter, but I will be using a very small image for this. Then there is a grid section. Maybe we can design it, but due to the time constraint, we are going to use the image for that. And all these small icons that you see are kind of image. उसके बाद सेंटर में एक बॉक्स है जो यूजर के लिए होगा, एंड देन वी हैव दिस गूगल सर्च एंड आई एम फीलिंग लकी बॉक्स, और एक फुटर है. सो दिस इज हाउ वी कैन target a particular section on the page. All right. So now that I have the idea of this, I have put a mind image for this thing. I can start developing this, because basically web development क्या है? आपके ideas को आपके code में convert करना. And we are going to do that right now. So we will go back to our ground of coding environment. So I'm going to skip through. I'm going to use a lot of stuff which you may or may not know, and you will get to know about all this when we work together, when we start our session. So I am quickly going to give a layout to my CSS, HTML,
and then we will work on the CSS part. So let's see how this works. How are we going to target all these elements here that we have? तो अगर आपको याद होगा, we said that we had multiple sections and HTML दो तरीके से डिवाइडेड होता है, एक हेडर में डिवाइड होता है और एक बॉडी पार्ट में डिवाइड होता है। बॉडी पार्ट वो होता है जिसमें सारा कंटेंट हमारा दिखता है, तो जो भी अभी हमने देखा, जो भी हमने विजुअलाइज किया, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हेडर होता है जो इंफॉर्मेशन देता है कि वेब पेज क्या है, उसके हेडिंग्स पे क्या होगा, टैब में नेम क्या होगा। सो दैट सेम थिंग is this title. So if I put this as Google, what is going to happen is, जब आप टैब स्विच करते हो अपने क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में, एक नाम लिखा रहता है उस पर, राइट? दिस इज दैट टैब। तो आई एम गोइंग टू यूज द गूगल्स नेम, मे बी वी आर नॉट क्रिएटिंग दैट, वी but right now we are just doing it for practice purpose. So let's just first of all quickly create certain stuff. तो सबसे पहले मैं इस सेक्शन को डिवाइड करूंगा एक मेन डिव में। डिव होता है एक सेक्शन, डिविजन्स होता है। We can use divisions, we will go in depth of divisions, but there is a tag. So HTML uses a lot of tags and these are the markup language. HTML का full form ही होता है hypertext markup language. That means मार्कअप करते हो कि आपको कहाँ पे क्या पोजीशन करना है, और उसके साथ वो बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। So it is not a programming language, it is a markup language, right? So if I go here, I will create a div over here. Now inside this div, मेरे को याद है first section, I will just create it for the reference, a small diagram over here, which will help us to actually remember what all things we need. So ये side में मैं left hand side पे ये this will be our screen, main screen, और Google के लिए मैं white use कर लेता हूँ. So there was this section where we had like couple of things over here, one image, name, then we had some, like I think there was, what was it? It was image, the name of the person, and then we had this small grid and then a circular box over here. यहाँ पे center पे एक Google का logo था. Then we had like small area for search. We had small buttons like this, two small buttons. Reference के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, और एक footer था, उसमें कुछ elements थे. तो मेरे को ये replicate करना है, right? Makes sense, right? तो अब हम लोग क्या करेंगे? We will be using HTML. We are going to mark up our page something like this. Now, since I know about HTML and I know a lot of stuff, how things work, what I will be doing is I will be quickly using those stuff, and I'll be like, okay, I'll use another div, और इसके अंदर मैं list out कर दूंगा all the things that are on the top. तो मैं ये top bar के लिए ये सारी चीजें लिख रहा हूँ. तो UL is a kind of a list. एंड एक बार जब मैं इसको क्रिएट कर लूं, सो लेट्स से फर्स्ट था जीमेल लिखा हुआ था, राइट? समथिंग वाज लाइक दिस, एंड वो एक लिंक था जिसको मैं क्लिक करता हूं तो इट टेक्स मी समवेयर. सो देयर इज अनदर टैग, ए टैग, which is called as inline tag. अभी के लिए मैं इसको कहीं पे भी नहीं लेके जाऊंगा, and this particular thing, Gmail thing, will go inside over here. So मैंने एक लिस्ट बना ली है, उस लिस्ट के आइटम्स पॉपुलेट कर रहा हूं मैं. तो at this point of time I will be having multiple stuff over here. So as you can see on the top we had Gmail, then we had the images, I think, yeah, images लिखा हुआ था. Then we had this small section which was actually our आइकन, स्मॉल आइकन. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इमेजेस हैं, ऑलरेडी लोडेड इमेजेस हैं, उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा. सो एनी images that we are going to use in a particular file can be set in one directory. तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि मेरा जो कोड है that has to be neat and clean, because readability आसान हो जाती है उससे. तो I'm going to copy all the images that I have had used for this particular project, and I'll paste it over here. Because I know what all images do I have. Okay, so as you can see, there are multiple images that got loaded. I don't want this. Yeah. So पहला है वो icon, small grid वाला icon. Google का logo है मेरे पास.
मैसेजेस का है जहाँ पे हमें प्लस बटन दबाना होगा. माइक्रोफोन चाहिए था हमें, माइक्रोफोन है. नोटिफिकेशन का बार था, वी वांट दैट. एंड देन वी हैव दिस फोटो, स्मॉल फोटो, जिसको हम सर्कुलर वे में यूज करने वाले हैं. तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है मेरे. आई एम टेकिंग दैट. तो अब हम क्या करते हैं, जो मेरा थर्ड सेक्शन था विच वाज आइकन्स पार्ट, what I'll do is I'll make it a href, and inside this I'll start using those images. So I will be using those images, and images को हमें अलग से बताना नहीं पड़ता. So I will be using this source which automatically picks up that image from the source. So I will specify कि image directory के अंदर एक icon image है, which is let's see what icon image was. Icon image was this particular thing, right? So I'm going to pick up this image and post it over here. So this is going to pick that up. And then there is also this thing called alt. These are all the attributes. We will learn about this in details, but let's have a feel and look of how our page is going to look like. So this is going to be, I'm going to say, if the page image does not load, have this particular icon. Or similarly, एक दो images और डालने हैं मेरे को. Let's say I have a notification part which I need to include. So I'm going to include the notification one. Let's say if I have a notification, this is the one thing, and I'll change this to this. Right now, I'm going to copy this, paste it over here again. I'll close it for now. And third thing was, I think I don't want messages. Maybe I can skip the messaging part, or I can keep the messaging part. So let's say I have a messaging tag as well. So I will use the messaging part. I will use the message part. So this is how we are referencing this. And I will show you once we create this particular tab. और एक हमारा user section था जहाँ पे हमने user image डालनी थी हम लोग को. So I am going to say photo, जो भी image थी, photo थी, and this is the user image. Okay. So we have created the very top layer of it at this point of time. We will move down. तो ये मेरा एक div यहाँ पे खत्म हो गया. तो ये मेरा पहला division है. तो आप देखोगे कि कैसे हम divide करते हैं एक पूरा section. तो ये हमारा पहला div है जो कि हमने ऊपर के लिए लिखा था. उस div के अंदर हमने वो elements create कर दिए जो हमें चाहिए थे. And we have created that div over here. Now what we will do is we will go and create a main div जो कि बीच वाला section है. Okay. और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं. So I'm going to create a div over here. And this whole section is going to contain that logo image, that division where we have this search box, then we have that particular buttons. All these things are going to come over here. So first of all, क्या चाहिए था हमें? Image चाहिए था. तो एक और division कर देंगे. These div tags are very helpful when we are dividing our image section, or we are dividing our pages into different sections. So I'm going to use an image over here, close it, which will come in between this div. The source is going to be nothing but our image slash logo, I guess. Yeah, logo. And I'm going to say alt. So if sometimes the images does not load, I'm going to put a Google logo. Okay. So we have this div. इसके बाद क्या है? सर्च बॉक्स है हमारे पास. सर्च बॉक्स को हम लोग क्रिएट कर लेंगे, उसको एक अलग डिवीजन में डालेंगे, और उसके अंदर भी हमारे पास दो चीजें. एक है, तो ये सारा सेक्शन एक साथ हम लिखेंगे, तो ये एक डिव में जाएगा, which will be my search box area. And you will also understand कि कैसे हम इंडिविजुअल चीजों को टारगेट कर सकते हैं. Alright. तो what I'll do is I'll go ahead and create a input field जहाँ पे मैं text लिख सकता हूँ. So I will give this a type of text. So this is another element which provided to us by HTML, जो हमें एक ऐसी field देता है जिसमें हम लिख सकते हैं. Okay. इसके नीचे दो buttons हैं. ये हमने यहाँ तक cover कर लिया है. अब हमें ये दो buttons create करने हैं. So how are we going to create that? I'm going to say okay. Take a div. I'm going to create a div, और इसके अंदर मेरे दो buttons होंगे. दो buttons होंगे, तो उस button को हम कैसे लिख सकते हैं?
या तो हम div बना के उसको बटन का डिजाइन दे दें या तो हम बटन टैग यूज कर सके. So what I'm going to do is I'm going to create this div और इसमें एक रेफरेंस दे देंगे कि इसको क्लिक करके I will be leading somewhere. So basically this thing takes us, this href means reference, hyperlink reference, कि इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो कहां पे जाएगा. If you remember, this particular div had a kind of image here. Remember you guys? Do you guys remember कि शुरू में एक माइक्रोफोन होता है गूगल में, सॉरी शुरू में एक माइक्रोफोन होता है और एंड में एक सर्च बटन होता है. सो आई एम क्रिएटिंग दिस पार्ट एज अ माइक्रोफोन सेक्शन. तो ये div मेरा सर्च एलिमेंट के लिए है और उस सर्च एलिमेंट के बाद सबसे पहले इनपुट बॉक्स होगा और हम लोग इस इनपुट बॉक्स में एक माइक्रोफोन हमें चाहिए था, राइट? तो वो माइक्रोफोन का रेफरेंस हम यहाँ पे एज अ इमेज दे रहे हैं. So that if someone clicks on that image that we have, so we will give the source of it, and that source is nothing but our microphone image, which is this, and I'm going to use this, and I'm going to do alt microphone. All right. तो ये मेरा सेक्शन हो गया, ये इनपुट बॉक्स वाला एरिया हो गया. अभी आप देखोगे विद टाइम वी विल मेक इट बेटर. सेकेंड सेक्शन क्या था, 2 बटन्स थे हमारे पास, ठीक है. तो हम लोग एक और डिवीजन करेंगे इस पेज का जहां पे हम रेफरेंस देंगे. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ए टैग और इसको हम लोग फिर बाद में देखते हैं कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं. बट दिस इज गोइंग टू बी माई गूगल सर्च बटन एंड देन वी विल हैव this particular thing as, no, not this, sorry. So I'm going to copy this and paste it over here, and we are going to have this as I'm feeling lucky, right? Google ka wo I'm feeling lucky wala button jo hai. So we will have this. Now since I'm going to create this as a part of our search box, what I will do is I will put it in a div. दोनों को एक div के अंदर रख देंगे. Now there is this basic thing that we need to do is div, और इस div के अंदर ये aref हो जाएगा मेरा, और इस div के अंदर we are going to have this part. I'm going to do this over here. Okay. Cool. तो अभी तक हमने ये पार्ट, बटन पार्ट, ये सारा डिविजन्स क्रिएट कर लिया है. So my this div comes to an end, which is my aref div. At this point of time, the search box container, the main container that we are going to have, क्योंकि ये लोगो हो गया, तो ये वाला div मेरा हो चुका है, right? अब मैं इसको थर्ड डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, which is the footer part. Okay. Now this footer part is going to help us, is going to take care of all the footer section, जो सबसे नीचे वाला part है. If I write it over here, something like this, ठीक है. और इसमें भी मैं ऐसे ही लिस्ट कर देता हूँ जैसे मैंने अपने हेडर पे किया था. 3 चीजें थी, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, अबाउट था, और आई थिंक प्राइवेसी टर्म्स और सेटिंग्स था राइट हैंड साइड पे, ठीक है. तो 2 सेक्शन है. तो एक सेक्शन में we are going to use the same UI li tags. Okay, same UI li tags, not this, you close here. Yeah, same UI li tags, and those UI li tags are going to be divided into 2 different divisions. One is the right hand side, one is the left hand side. तो इसके अंदर हम UL लिखते हैं और li tags create करते हैं. And since everything inside that was being referred somewhere, so I'm going to use this as my reference. Okay, and I'll call this advertising, और इसी को मैं कॉपी करके 3 और लिख लेता हूँ. Advertising था, then there was this another thing called business, और तो ये सारी चीजें आपके सामने इमेज रहेगी तो आप you will be able to do it, क्योंकि I know how this thing works, so you will be, I'm just giving you a brief idea of how things work
इन अ वेब डेवलपमेंट और आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो ये होल सेक्शन मेरे को एक बार और लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड के लिए भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर चाहिए एंड दैट विल से प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड सेटिंग्स, राइट। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड सी। हमने ये मेन, तो मेरा मेन सेक्शन है, एक डिव के अंदर हमने सबसे पहले हेडर वाला पार्ट डिफरेंटली काउंटर किया, फिर जो मेरा मेन वाला सेक्शन था उसको हमने डिफरेंट तरीके से लिखा, और जो फुटर सेक्शन था उसको हमने डिफरेंट तरीके से लिखा। तो सारी चीज को हमने डिवाइड कर दिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू रन दिस थिंग। ओके, can I run this thing? So there is a shortcut, short way of writing this thing, and that short way is called this particular live server. So let's go back and see how our screen looks like. All right, can you see this? Looks like I'm having a very bad internet issue, bad internet connectivity, but still ऐसा लग रहा है कि मैं गूगल का पेज लोड कर रहा हूँ, right? Can you guys see this? Are you guys able to see the image on your screen? Yes. So it looks like a bad internet connectivity वाले जगह पे हूँ। तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि मेरा इंटरनेट खराब है, बट इंटरनेट खराब नहीं है। मैंने सिर्फ HTML लिखा है, अभी मैंने इसको प्रेजेंटेशन नहीं दी है। प्रेजेंटेशन नहीं दी है, इसका ये मतलब है कि हमें इसको और डिजाइन करना पड़ेगा, राइट? तो हमने बस एक बहुत बेसिक मार्कअप किया है अपने चीजों का कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पोजीशन होगी चीजें। ऑलराइट, ओके, टेक अ कपल ऑफ मिनट्स ब्रेक, फिर हम लोग आगे चल के इसको थोड़ा डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो 1 मिनट का ब्रेक लो, पानी पियो, थोड़ा सा सोचो। आई लीव द कोड ओपन for you guys to see, and then we can start working on the design part of it. So what I'll do is I will just merge these two pages together. Let's go to our home page. I hope you can see this, and I'll open the stuff. Try to understand how I have positioned each and every element and how it is getting seen over here. Okay, so can you see this? Can you see the code here? If you guys know about HTML, well and good. If you do not, it's just a way of presenting our data. तो 1 मिनट लो, पानी वानी पियो, थोड़ा ज़्यादा information भी boring हो जाती है. So we will give you 1 minute. Go drink water, come back, and then we will style it in the way Google does it. Okay, and these things are going to get interesting.
Alright, पी लिए पानी, ready for the second half of it. चलो ठीक है, तो अब हमने देखा कि how my web page is broken at this point of time, and it is looking like कि मैं बहुत ही बेकार इंटरनेट कनेक्शन में हूँ, बट वो अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में भी वैसा ही दिखेगा, क्योंकि आपने अभी बस लेआउट डिजाइन किया है इसका, एंड लेआउट के बाद अब हमें इसको स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने HTML तो यूज कर लिया, प्रेजेंटेशन के लिए वी यूज CSS। तो CSS में हम रेफर करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन यूजिंग सर्टेन पार्ट ऑफ आवर जो divs और elements अब जो हमने बनाया है उसका यूसेज आपको समझ में आएगा। तो what I'll do is I will just give these classes and you will understand this. We will talk in details about classes later. तो ये एक wrapper class का नाम दे देता हूँ, इस class का नाम मैं दे देता हूँ, ये मेरा navbar है, so I'm going to give this class a name of navbar. This is my li element for the name part, so let's say Gmail, so maybe I'll have to use certain text or font style for this, तो इसका मैं class का नाम Gmail दे देता हूँ. I'm going to copy this class element and paste it. ये images लिख देता हूँ मैं, okay. This one gets a name of icons, I think, yes. So I will give this a name of icons. क्लास डिवाइड कर रहा हूं मैं बेसिकली, क्योंकि ये सारी चीजें हम टारगेट करेंगे इंडिविजुअली और फिर इनको डिजाइन करेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर क्लास कॉल्ड मैसेजेस, एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर क्लास लेट्स से पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट। ओके, तो ये हमने डिवीजन कर दिया, मेरा नैप बार डिवीजन आ गया। तो अब ये थोड़ा ज्यादा बेटर दिखेगा मेरे को, अगर मैं खुद भी अपना कोड रीड कर रहा हूँ तो आई विल फाइंड इट मच मोर इजियर टू रीड इट, राइट। क्योंकि अब मैंने इसको कुछ क्लासेस दे दी हैं। क्लासेस का ये मतलब होता है कि एक टाइप ऑफ डिजाइन उन सब चीजों पे अप्लाई होगा, ओके। नाउ वी हैव दिस division, another division called main division, so I will call this, तो हम लोग कंटेनर बहुत वर्ड यूज करेंगे। कंटेनर का ये मतलब होता है कि कुछ कंटेन करता है इसके अंदर, तो आई विल गिव दिस क्लास कंटेनर मेन, लेट्स से मेन कंटेनर, ओके। और फिर ये मेरा मेन इमेज लोगो है, तो आई विल से क्लास ऑफ लोगो, ओके। एंड ये मेरा सर्च बॉक्स क्लास है, so I will give this box a search box class over here. search box class का नाम दिया है, main को भी हम ऐसे नाम देंगे, underscore नहीं यूज करते हैं, my bad. So this is one thing that we keep in mind. Either we give like this is the naming convention that we use for the classes that we are going to have. Okay, then we have this type, फिर इसको भी एक क्लास दे देते हैं, एंड आई विल से ये एक कंटेनर है जो कि प्लेस होगा मेरे इनपुट बॉक्स के अराउंड, राइट। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस एज अ कंटेनर माइक, मे बी माइक कंटेनर, एक छोटा सा सेक्शन चाहिए मेरे को माइक के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सेकेंड डिव जो है मेरा, दैट इज फॉर द बटन्स, राइट। सो आई विल कॉल दिस एज अ क्लास ऑफ buttons, so container button search, I'll call this, ठीक है। सर्च बटन्स है मेरे, और इसके अंदर इस div को मैंने क्लास दिया गूगल सर्च बटन, गूगल सर्च बटन। और क्योंकि मेरे पास दो बटन्स हैं तो मैं इसको दो क्लासेस दे सकता हूँ, क्योंकि एक गूगल सर्च बटन के लिए अलग से डिजाइन डालूंगा और एक कॉमन डिजाइन होगा दोनों के लिए, दोनों बटन के लिए। तो उसके लिए मैं ये बटन सर्च डाल देता हूँ अभी के लिए, लेट्स सी इफ वी यूज दिस और नॉट, ठीक है। तो सेम थिंग गोज ओवर हियर, इस div को मैंने एक क्लास दे दी, एंड आई विल कॉल दिस फीलिंग लकी, बटन है, और
button search again. दोनों part of the button है, right? So I'm just dividing it into different sections so that I will be able to target this. तो अब मेरा main container भी divide हो गया into different stuff. Now let's come to the last part, जो कि we usually call it footers. इसको हम लोग footers बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा हर स्क्रीन के नीचे रहेगा. So this is the footer class और इसमें मैंने दो divisions किए थे, एक right के लिए एक left के लिए, right? I don't know why I have these two divisions. Let me see if I have made an extra division over here. Yes, I think I have made an extra division over here. I don't need this div class क्योंकि इसके अंदर दो div की जरूरत नहीं है. So I'll just remove this div और नीचे से एक div इसका ये हटा देता हूँ. Yeah. So as you can see, ये सारी चीजें readable बनाने के लिए and divide it according to the need of a web page. इसको बोलेंगे I want this to be the left of it, so I will say footer left. So this comes as one div, and then we have another class for the right part. So I'm going to write this as footer right. Okay. All right. तो visually अगर हम लोग देखेंगे इससे कोई change होगा नहीं. So if I go back to the screen, जो मेरा main Google screen था, there is no much change as of now, but अब ये चीज हमारे लिए much more readable हो गई है. This thing has become much more readable in terms of the code because हमें ही code करना है, हमें ही सारी चीजें divide करना है. So this makes sense, right? Do you feel कि ये अब मेरे को अगर कोई particular section में कोई नया code डालना है या कुछ डालना है, so I can just go ahead and say अच्छा ठीक है, इस div के अंदर मेरा main content होगा, वो वाला type of content होगा. So we will go ahead and start writing that. All right. I hope you guys are getting the flow of how the classes work for a full stack, right? Obviously, there will be a lot of doubts in your mind कि ये क्या होता है? There are a lot of details about these things. So due to this, we are having this demo session, and when we work on our actual classes, this will make more sense. Everything will make more sense because you will have time to understand each and every element of this. तो मैंने ये डिवाइड कर दिया है. अब मेरे को ये डिजाइन करना है. तो डिजाइन के लिए हम यूज करते हैं CSS. उसके लिए अभी के लिए मैं एक अलग से फाइल बनाऊंगा और उसका एक्सटेंशन होता है style.css. ओके, एंड आई एम गोइंग टू लिंक इट. देयर इज अ वे टू लिंक इट टू माय फाइल, एंड I'm just going to link it over here using this reference, and I'll tell what is the reference of this. So from where are you going to pick this file up? And that file is nothing but our style.css file that we have created. And I'm going to use this style.css part. Okay. Also, you can specify, it is not necessary, but you can specify it for the better readability of the code and understanding of the type of file we are using. We will say that this is a CSS file. Okay. All right. तो style.css में सबसे पहले this is called a reset. अब क्या होगा कि जो भी मैं स्टाइल लिखूंगा यहाँ पे, that will get applied to my page over here, and हम लोग individually एक एक पार्ट को टारगेट करना शुरू करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले what I'm going to target is my main body, main HTML, and this is called a reset. तो ये basic programming standard है, ये कोई जरूरी चीज नहीं है, but क्योंकि हम अपना स्टाइल देने वाले हैं किसी भी पेज को, तो हम चाहते हैं कि जो स्टार्ट हो वो बेसिक से स्टार्ट हो. सो आई एम गोइंग टू गिव दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज. तो HTML और CSS क्या करता है? CSS एक डिजाइन प्रोवाइड करता है, एंड इट टारगेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स बाय द नेम ऑफ इट और बाय द क्लासेस, एंड देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्टिंग दोस स्टफ. तो हमने दो एलिमेंट एक साथ सेलेक्ट किया, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड प्रॉपर्टीज टू दिस. वी at this point of time, if you are having in this confusion in this, basically these things are the layout of a element कि एक element के around क्या क्या चीजें होती हैं. and if I go to the padding part of it, so अभी मैं क्या कर रहा हूँ? सब चीज reset कर रहा हूँ. Before the page loads, everything gets reset. तो थोड़ा सा changes आपको दिखेगा, maybe visually, I don't know.
we will see that. मैं font size को भी 100% कर देता हूँ. I will do this as 100%. Or I'm resetting everything that I have right now. So if I go back to my Google Chrome page, विजुअली आपको कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, बस सब चीजें थोड़ी सी और लेफ्ट में चिपक गई हैं, आपके स्क्रीन के साथ है. इफ यू सी द एलिमेंट्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी लेफ्ट हैंड साइड. सो वो जो छोटे छोटे डिफॉल्ट चीजें होती है वो मैंने रीसेट कर दी. सो लेट्स कम एंड start working on our main page, which is the general section. तो सबसे पहले मैं general body के बारे में डिजाइन देना चाहता हूँ. तो since I have the idea of how things are going to work, I will have this body part और उसको मैं एक font size देना चाहता हूँ कि जो जितना भी elements है body के अंदर उसका font size 13 pixels हो. Okay? जो भी text है उसका size तो जितनी भी चीजें body के अंदर है that will have a 13 pixel text. And I'm going to use the font family जो आपने काफी बार use किया अगर आपने Word document use किया है तो I'm going to use this particular font family. तो अब थोड़ा सा visual difference दिखना शुरू होगा. So I'll just share the desktop one, and if I 1 second, I'll just share the screen over here. Yeah. So on the right hand side, if you see, मेरा जो font size है वो थोड़ा सा छोटा हो गया. Can you see it? The font size has become smaller. तो अब हम individually चीजें target करना शुरू कर रहे हैं, right? Can you guys see this? कि मेरा फॉन्ट साइज में भी बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस आया है. पहले बड़ा टेक्स्ट था, अब थोड़ा टेक्स्ट little bit smaller. It has become a little bit smaller. So what I'll do here is I'm going to add. तो ये मेरा जनरल बॉडी का स्टाइल हो गया. तो बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स है इट इज गोइंग टू टेक अप दिस पर्टिकुलर स्टाइल. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक माय ए टैग्स व्हिच इज माय रेफरेंस टैग्स और उसका टेक्स्ट डेकोरेशन में हटाना चाहता हूँ. जो भी वो अभी जैसा वो रेगुलर फॉर्म में दिख रहा है, जैसे ये ब्लू दिख रहा है और अंडरलाइन दिख रहा है, आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट टू हैव माय ओन स्टाइल एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. So there is this thing called text decoration and I'm going to say none. तो ये text decoration हट जाएगा और color जो है there is a property of color और मैं बोलूँगा कि जो भी इसके parent का color होगा, and parent and child relationship is something that CSS follows. If you are aware of it, you will understand this. Now if I go ahead, you see all my color has changed, right? The styles are getting started to get applied to my particular page, right? Pretty interesting how these things work. तो सिमिलरली अब जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा या जब मैं इसके ऊपर कोई भी माउस पॉइंटर ले जाऊंगा तो how is it going to look? I'm going to style this as well. So I'm going to say okay, जब मैं इसके ऊपर माउस ले जाऊं तब इसको अंडरलाइन कर देना, not when it is normally loaded. Okay, तो ये बहुत जनरल डिजाइन हो गया. I will keep the general design सब चीज के लिए. अभी हमने इंडिविजुअली टारगेट नहीं किया चीजें. सो at this point of time, if I hover over any a tags, so as you know, these are the a tags, these are the a tags. तो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तब ये अंडरलाइन कर रहा है, राइट? जो भी a tags हैं that are getting underlined whenever I'm hovering over it. Make sense? I guess this is visible to all of you. किसी को दिक्कत हो रही है तो do let me know. Are you guys able to follow along? If you're not able to follow along, at least you are getting an idea of how things are done, right? Visually कोई problem आ रही है? Are you guys able to see the screen? I'm changing the screen frequently. This is giving you the feel of the class, right? How the classes are going to happen. All right, shall we continue? All right, cool. तो अब जनरल डिजाइन हमने कर दिया है. अब हम लोग नेविगेशन पार्ट को टारगेट करते हैं. तो नेविगेशन पार्ट में I will give it a division of navigation part.
अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले जो क्लासेस यूज करी थी अब उनका फायदा होगा. So I'll go close all this image tags and close this as well. और better visibility के लिए मैं इसको दो स्क्रीन में डिवाइड कर देता हूँ. ओके, तो सबसे पहले हमारा ये जो क्लास था, navbar क्लास था, उसको हम टारगेट करते हैं. तो मेरे को ये nav bar को एक लाइन में लाना है, राइट? आई हैव टू अलाइन इट इन वन लाइन. These images should go on the right hand side of everything. ओके, तो इंडिविजुअली टारगेट करते हैं. सबसे पहले मैं nav bar के लिए एक डिजाइन लिख देता हूँ, एंड दिस इज हाउ वी टारगेट एनी क्लासेस. So I have given this a class of nav bar, and this nav bar is going to have a display property, and there is a property called block. That means ये पूरा एक width of the screen में adjust होगा. Okay, so I have this display property, or this is a float property which will actually float it to the right of this whole div. तो ये div का जितना भी कंटेंट होगा वो राइट के साइड पे फ्लोट कर जाएगा. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक. सो आई विल गो टू माय इमेज पेज, एंड यू सी ये राइट साइड पे स्क्यू हो गया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्पेस बन गया है मेरे में, तो जो बाकी एलिमेंट्स है वो ऊपर चले गए. करेक्ट. सो लेट्स मेक मोर ऑफ इट. तो नेविगेशन को हमने फर्स्ट एजेंडा हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम नेक्स्ट पार्ट टारगेट करते हैं, विच इज द nav bar का li tags. ओके, तो इसके अंदर li tags हैं. तो दिस इज हाउ वी टारगेट कि nav bar के अंदर जितने li tags हैं तो उस क्लास का नाम और द elements name that we are going to target. So this is like a parent child relationship which says any class that has this nav bar class, and if there is any li inside that nav bar class, you are going to give this particular design to that. Okay, तो in li को मेरे को एक लाइन में लाना है, right? All this thing should be in one line. So what I will do is I will actually create the display properties for this, and I will call this as inline block. So this is the property which helps us to align it in one line. Okay, so let's see this. All right, so this looks, we are leading somewhere. टॉप राइट कॉर्नर में आ चुका है, अलाइन भी हो चुका है. थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है हर एक एलिमेंट के बीच में, तो आई एम गोइंग टू ऐड समथिंग फॉर दैट, एंड दैट इज कॉल्ड पैडिंग. सो इट इज गोइंग टू ऐड पैडिंग ऑल अराउंड दैट एलिमेंट, नॉट जस्ट राइट और लेफ्ट. इट इज गोइंग टू ऐड दैट पैडिंग. तो लेट्स से मेरे को लेफ्ट में पैडिंग ऐड करनी है सबकी, क्योंकि सब अपने लेफ्ट, जीमेल के लेफ्ट पे, इमेज के लेफ्ट पे, इस इमेज के लेफ्ट पे, इस नोटिफिकेशन बार के लेफ्ट पे, इस मैसेज के लेफ्ट पे. सो वी आर गोइंग टू डू दिस. I'm going to add a padding of, let's say 15 pixels. तो पिक्सल्स का आइडिया होगा, राइट? तो अभी आप देख रहे हो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, सो आई कैन ऑल्सो गिव इट अ पैडिंग ऑफ 10. और सिर्फ मेरे को लेफ्ट पैडिंग चाहिए, तो आई एम गोइंग टू टारगेट द लेफ्ट पार्ट ऑफ इट. सो इफ यू सी 10 पिक्सल्स लुक्स बेटर टू मी. थोड़ा सा इमेज स्प्रेड आउट है, जीमेल, थोड़ा सा एलिमेंट जी गूगल जैसा दिखना शुरू हो रहा है, राइट? ऑलराइट, सो अब मैंने li टैग्स को कर दिया. अब इनके इमेजेस में छोटे करने वाला हूँ क्योंकि ये साइजेस बहुत बड़े हैं. सो आई विल टारगेट द इमेज पार्ट ऑफ इट अगेन. तो अब सिमिलरली आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड पुट इट ओवर हियर एंड पुट एन इमेज टैग ओवर हियर. और इस इमेज को एक हाइट स्पेसिफाई करूंगा कि इस हाइट से ज्यादा ना हो. सो लेट्स से लेट मी स्टार्ट विद 25 पिक्सल्स. तो इमेज की हाइट बेटर हो गई, राइट? थोड़ी सी ठीक हो गई है. इट लुक्स बेटर इन हाइट. बहुत ऊपर है इमेज, तो मैं उसकी पोजीशनिंग टॉप से थोड़ी नीचे करता हूँ. ठीक है, तो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड पोजीशनिंग व्हिच सेज कि इस इमेज का जो भी पोजीशन है अपने HTML डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से अब जितने भी पिक्सल्स में मूव करना चाहूंगा वो उस हिसाब से मूव करेगा. So that thing is specified by relative, and as I said I'm going to move down a bit. तो टॉप से कितना दूर मूव करना है, तो let's say 7 पिक्सल्स मूव करना है मेरे को. So can you see
this got aligned. क्योंकि अब क्या हुआ है कि जितने भी इमेज हैं, देर आर ओनली कितने इमेजेस हैं? आई थिंक 1 2 3 4 इमेजेस, राइट? आइकन के, नोटिफिकेशन के, मैसेजेस के एंड फोटो के. तो ये li टैग्स इनिशियली जब मैंने ये स्टाइल नहीं लिखा था, थोड़े से ऊपर थे, थोड़े से ऊपर थे. इसको मेरे को 4-5 पिक्सल्स नीचे करना था ताकि इनके साथ अलाइन हो जाए. तो टॉप रिलेटिव किया, तो बेसिकली ये जो li टैग है इसी के पोजीशन के हिसाब से इट इज मूविंग इटसेल्फ. एंड टॉप 7 पिक्सल्स मींस कि ऊपर से इतना स्पेस होना चाहिए. 7 पिक्सल ऑफ स्पेस शुड बी अवेलेबल. So this looks much cleaner now, correct? Maybe I will remove this images over here. ये दोनों की जरूरत नहीं है मेरे को क्योंकि अब ये लेटेस्ट डिजाइन हो गया है. So messages और ये हटा देता हूँ मैं. I'll just have these two things, right? Gmail, images, this thing and this part. But बहुत ज़्यादा right के तरफ घूमा हुआ है. तो पोर्ट्रेट को मेरे को एक्चुअली गोल बॉर्डर में लिखना था, करेक्ट? पोर्ट्रेट को मेरे को गोल बॉर्डर में करना था. तो जो पोर्ट्रेट का इमेज पार्ट है उसमें हम उसको सर्कुलर करते हैं सबसे पहले. सो आई एम गोइंग टू टारगेट nav बार के अंदर जो भी पोर्ट्रेट वाला क्लास है, विच इज दिस क्लास, और उसके अंदर जो भी इमेज टैग है. ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस and copy it over here. उसके अंदर का डॉट पोर्ट्रेट, उसके अंदर का डॉट नॉट डॉट इमेज पार्ट, क्योंकि वही इमेज पार्ट है, राइट? तो उस इमेज को मेरे को सर्कुलर करना है, तो उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं. एंड आई एम गोइंग टू गिव, अगर मेरे को कोई भी चीज सर्कल करनी होती है तो आई गिव इट अ रेडियस ऑफ 50%. सो इट मेक्स इट 50%. एंड एज यू कैन सी वो सर्कुलर हो गया है, राइट? कैन यू गाइस सी इट? गोल बन गया है. इट इज समथिंग दैट looks like a circle. Can you guys see that small circle on the right top? कि छोटा है. If I increase the size of this, right? राइट साइड में सर्कल हो गया है और ये थोड़ा सा बेटर लगने लगा है मेरा पेज. मे बी इसका थोड़ा सा हाइट इफ वी कैन इंक्रीज, लेट मी सी, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है. Maybe I'll give this image a height specification of, let's say, 30 pixels. Yes, looks much better. पहले काफी छोटा था. It looks much better. अब थोड़ा सा राइट में भी बहुत चिपका हुआ है, राइट में भी बहुत चिपका हुआ है. तो what we will do is we will use this dot portrait class जो भी li है, क्योंकि portrait जब हम टारगेट करेंगे तो ये वाला li टारगेट होगा. ओके, सो डॉट पोर्ट्रेट से हम क्या करेंगे, पैडिंग ऐड कर देते हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इट एंड मे बी 20 पिक्सल्स और समथिंग. तो राइट साइड से वो मूव हो जाएगा. एंड दिस लुक्स मच बेटर, राइट? दिस लुक्स मच बेटर. Maybe I will move it a little bit down, 2-3 pixel. I will move it down. So do the same thing over here. Position relative करके we will move it a little bit down, like 3 pixels or something. Yes, this looks much better, much aligned accordingly. So do you see how minutely we are targeting each and every element? तो मेरा nav bar तो sorted है. अब मेरे को ये main section पे टारगेट करना है. तो लेट्स क्विकली गो अहेड एंड स्टार्ट टारगेटिंग आवर मेन सेक्शन. इसको भी पोजीशन करते हैं. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू पोजीशन दिस. वी आर गोइंग टू हैव दिस एज अ मेन सेक्शन और इसको हम अब टारगेट करेंगे. तो ये पार्ट मेरा सॉर्टेड है, ऊपर वाला. अब नीचे वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले कंटेनर, जैसे अभी देख रहे हैं ये यहाँ पर है, इसको मेरे को बीच में लाना है, थोड़ा छोटा करना है. इनपुट बॉक्स को थोड़ा बड़ा करना है. मेरे माइक्रोफोन को इनपुट बॉक्स के अंदर डालना है. गूगल सर्च और आई एम फीलिंग लकी का बटन बनाना है. सो दीज आर द 3-4 things that we need to do in this part. So what I'll do is I'll go ahead and make this container main नाम है इसका.
और इसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्प्ले करता हूँ क्योंकि वो सेम लाइन पे चला गया है विद माय nav bar. I want to pull it down, तो इसको मैं थोड़ा ब्लॉक एलिमेंट बना देता हूँ और इसका विड्थ मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि पूरे स्क्रीन का विड्थ लेना, ये जो भी मेन सेक्शन है मेरा. So if I do this, let's see what are the changes. So this is still over here. Now what we will do is we will align it in center and see what happens. So we are going to align this in center and this is going to be text align center. तो at this point of time जो मेरा मेन कंटेनर है वो बीच में आ गया है बट इट इज स्टिल ऑन टॉप ओवर हियर. अभी के लिए इसको रखते हैं बट थोड़ा सा इमेज बड़ा है, बड़ा इनपुट बॉक्स छोटा है. आई एम फीलिंग लकी एक लाइन में नहीं है. ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर. सो लेट्स टारगेट दोज एलिमेंट्स. सो सबसे पहले लोगो टारगेट करते हैं और लोगो को थोड़ा सा साइज में चेंज करते हैं. सो जो लोगो एलिमेंट है दैट इज गोइंग टू टेक अ विड्थ ऑफ 100%. 100% विड्थ लेगा. बाय विड्थ आई मीन जो भी स्क्रीन है. ऊपर से थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को. सो आई एम गोइंग टू add a padding on top of around 20 pixels maybe and a padding at bottom because नीचे से भी थोड़ा space चाहिए उस input box के लिए. So as you can see it moved a little bit down, right? Padding top किया, padding bottom क्योंकि ये जो मेरा input है, input box है वो G के बहुत सामने है. तो I will give it a 20 pixels. ठीक है, top से 20, bottom से 20. बट मेरे को इसको बीच में लाना है. आई वॉन्ट दिस होल थिंग टू कम डाउन. तो इंस्टेड ऑफ 20 अगर मैं पैडिंग 200 करूं, लेट्स सी वेयर इट कम्स. ऑलराइट, दिस लुक्स मच बेटर, राइट? बीच में आ गया है, गूगल जैसा दिखने लगा. करेक्ट. सो इफ आई गो टू 100% thing, this looks a bit like Google. Okay, so you can play around with these style properties. इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो. ये मैंने जुगाड़ तरीका लगाया है. There are much better ways of handling these kind of stuff. Instead of adding padding, I would have used a different section, placed it under my nav bar और उस nav bar के context में लगा था. So there are different ways of doing all this. अभी मैंने एक जुगाड़ लगाया. This is a जुगाड़ that we do on styling part. Okay. आइडियली वो चीज़ मेरे इस नैव के नीचे आनी चाहिए थी बट क्योंकि हमने इसको फ्लोट कर दिया था तो वो जो लेफ्ट वाली जगह थी वो खाली हो गई थी एंड माई div was behaving that the way it is supposed to behave and it was taking that space. So based on the design I am using this and it has come to center. इमेज थोड़ा सा बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, इमेज को अब थोड़ा टारगेट करते हैं. तो डॉट लोगो में जो इमेज टैग है which is this. For this, what I'm going to do is make this display as block. तो image tag क्या होता है? It's usually an inline block. That means वो उतना ही जगह लेता है जितना उसमें content है. तो अब मैं क्या करूँगा कि display as block करूँगा. तो as you see, this has moved on the left hand side again, right? This image has moved on the left hand side क्योंकि वो लोगों से बाहर आके उसने अपना खुद का एरिया ले लिया है and it is taking that whole space, right? तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा width थोड़ी इसकी कम कर देता हूँ. Let's say I'm making a width of 250 pixels. इस image block को 250 pixels दे रहा हूँ and 250 से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं. Let's say take 270 pixels. Yeah, this looks good. I think this looks okay. जब ये center पे आएगा तो this will look much better. Okay. हाइट इंक्रीज कर देते हैं इसकी. लेट्स से इसको मैं 100 पिक्सल्स की हाइट दे देता हूँ. तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है एज यू कैन सी और इसको मेरे को सेंटर पे लाना है. सो देयर इज अ ट्रिक दैट वी यूज यूजुअली एंड वी कॉल दिस 0 पिक्सल टॉप एंड बॉटम ऑटो. तो ऑटो से क्या होगा, जो लेफ्ट एंड राइट वाला जो स्पेस है वो ऑटो एडजस्ट होके ये सेंटर पे ले आएगा गूगल को. All right, this has started to look more like Google page, right? Do you guys agree or not? Size के साथ we can still play around a bit. Maybe I will give it a 300 pixel width.
So if I give it a 300 pixel width, this looks much better. Maybe 500, क्योंकि मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें. 500 ज़्यादा skewed हो गया, right? तो height increase करते हैं. Let's make it 150 pixels. Yeah, this looks much better. What do you say, guys? This looks much better than the previous one, right? तो आप देख रहे हो कैसे हम प्ले अराउंड करते हैं CSS में स्टाइल करने के लिए. चलो फिर क्विकली सर्च बॉक्स भी डिजाइन कर लें. सर्च बॉक्स भी डिजाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसा रहता है सर्च बॉक्स का. उसको भी मेरे को अलाइन करना है. तो सर्च बॉक्स के लिए आई विल से ऑलराइट, सर्च बॉक्स का एलिमेंट हम टारगेट कर रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहले व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर डिव ऑफ विड्थ, क्योंकि ये सारी चीजें कंटेनर मेन के अंदर आ रही हैं. तो इसका जितना भी टेक्स्ट होगा वो सेंट्रली अलाइन हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दिस इज अ चाइल्ड ऑफ कंटेनर मेन. तो अब मैं सिर्फ सर्च बॉक्स को स्पेसिफाई कर रहा हूँ. तो ये इसका जो भी विड्थ है दैट इज गोइंग टू be something that I'm going to specify. So I'm going to specify a width of अगर मैंने 500 image का width दिया है, so let's say I give this a 600 pixel width. Okay, so it comes over here. It has taken all that width that we have provided this, and height भी provide करता हूँ मैं इस particular section को. Let's say 50 pixels of height. So we see that ये input box पर मैं click कर रहा हूँ तो it is becoming like this. इसको center लेके आना है तो same trick use करूँगा मैं जो margin वाली trick थी. I'm going to use this trick over here again. So if you see it has come in center, right in center. और इसका position में relative कर देता हूँ ताकि मेरे को ये relative position मेरा काम आएगा जब मैं microphone place करना चाहूँगा इसके अंदर. ठीक है. And there is a bigger concept, there is a more positioning concept on CSS that helps, but you will see why I'm using this in a moment. तो अब मैंने ये तो कर लिया है टारगेट. अब मेरे को इनपुट एलिमेंट भी टारगेट करना है क्योंकि अब मेरे को इनपुट का साइज जो टेक्स्ट साइज है वो बड़ा करना है. So I'm going to increase the size of this input and give it a width a little bit lesser than my box का width. ठीक है, क्योंकि मेरा width जो है 600 pixels है तो why not give it a 570 pixels or something. So let's see what happens. And this has become much wide. थोड़ा सा और कम कर देते हैं to have this 500 pixels. 500 pixels is still too much. Let's give it a 450 pixels. Still better, but Google से बड़ा नहीं होना चाहिए सर्च बॉक्स, तो थोड़ा सा और कम कर सकते हैं. इसको 430 करते हैं. I think this will do. Yes, this will work for me. क्योंकि मेरा जो width है वो अकॉर्डिंग गूगल से कम होना चाहिए. तो I have done that. Size height भी increase कर देते हैं. And I'll make a height of maybe 30 pixels initially and check. So let's go and check. 30 pixels से एक दो कम कर सकते हैं एलिमेंट. Let's take it at 27 pixels. Yeah, this looks okay. अब मेरे को ये इमेज को अंदर प्लेस करना है, राइट? अंदर प्लेस करना है. तो सबसे पहले तो इसको एक बॉर्डर दे देते हैं अभी के लिए. अगर आप देख रहे हो तो इसका बॉर्डर जो है काफ़ी ब्लैक है, विच यू कैन वर्क ऑन. बट थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट में एक पैडिंग अप्लाई करके जो इसके अंदर का टेक्स्ट है, ये जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, इसको थोड़ा सा और स्पेस से स्टार्ट करना चाहिए. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक दिस अ लिटिल बिट मोर बोल्डर. सो बॉर्डर का एलिमेंट्स हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि कितना थिक बॉर्डर चाहिए. तो 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए मेरे को. सॉलिड होना चाहिए ये बॉर्डर. और देयर इज दिस कलर ऑफ हेक्स कोड ऑफ डी विच इज मोर ऑफ अ वाइटिश बॉर्डर जो गूगल से मैच करता है. तो ये कलर जो है बेसिकली गूगल का ही कलर उठाया मैंने. एंड यू कैन सी दैट दिस इज मैचिंग व्हाट गूगल का सर्च बार लुक्स लाइक, राइट?
So there we go. There we have this. And then we will have a padding of stuff inside this. So 0 pixels or 10 pixels अगर हम लोग ले लें right or left में, so this will look much better for us. So if I start my cursor, now you see padding add करने के वजह से क्या हुआ है कि ये थोड़ा right से start हो रहा है. Okay, so this looks okay. इसका भी पोजीशन हम रिलेटिव करते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एक इमेज टैग डालने वाले हैं और उसमें ये चीज काम आएगा. ओके, फ्लोट कर लें क्या इसको लेफ्ट पे. अगर मैं फ्लोट करता हूँ लेफ्ट पे, ऑलराइट, तो अगर मैं फ्लोट किया लेफ्ट पे, एज यू कैन सी जो बची हुई जगह थी दैट हैज बीन टेकन अप बाय द इमेज टैग दैट वी हैव ऑफ द माइक्रोफोन, राइट. तो इनपुट बॉक्स एक इनलाइन टैग होता है, दैट मीन्स उसके अंदर जितने भी टैग्स होते हैं इट इज गोइंग टू टेक अप ऑल द स्पेस. तो जितना स्पेस बचा है उससे क्या हुआ है, हमने लेफ्ट फ्लोट कर दिया है इस सर्च बॉक्स को, तो ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव कर गया है. एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक दिस माइक्रोफोन कम इनसाइड ओवर हियर. थोड़ा सा माइक को शिफ्ट कर लेंगे पोजीशन में. तो इसके लिए व्हाट आई विल डू, z index 10, I'll see what this does. तो आप देख रहे हो ये z index 10 करने से जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये काफी ब्राइट हो गया है. जब मैं इसको हटा रहा हूं, so if I click on this, this becomes a little less brighter. So we can choose this or not. Let's just keep it over here. Z index के बारे में I don't want to confuse you. अब हम लोग माइक को टारगेट करते हैं. So container mic आया, not this, container mic. माइक को क्या करना है हमें बेसिकली इसको पोजीशन करना है inside this. So I'm going to first of all make it absolute and you will see what will happen. If I make it absolute, you see where it goes. क्योंकि ये एक एलिमेंट है, वो अपने पेरेंट के हिसाब से पोजीशन हो रहा है, इसलिए आई सेड आई विल बी यूजिंग दैट रिलेटिव पोजीशनिंग. और जितने भी उसके चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग एब्सोल्यूट देंगे, तो इट पोजीशंस अकॉर्डिंग टू द पेरेंट. देयर आर मच मोर डिटेल्स अबाउट दिस, बट फॉर नाउ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस यू विल अंडरस्टैंड इट. एंड आई विल मेक इट अ लिटिल बिट बिगर. जो भी विड्थ है उसके एलिमेंट का आई एम गोइंग टू से यू टेक द 100% ऑफ दैट विड्थ as well as take a height of 100% for that. Cool. Okay, तो उसने पूरी width ले ली है अपने element की और height भी 100% ले ली है. Maybe we will have to change a little bit of image size of this because ये थोड़ा सा skewed है, center पे आ गया. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके image tag को target करेंगे individually, क्योंकि ये हम div को target कर रहे थे अभी तक, तो वो div का position पूरा हिल रहा था. अब हम individually image को कहाँ position करना है उस particular div के अंदर, उस पे काम करते हैं, क्योंकि that is what is making it float on the center. So I will float it on the right side, क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैंने इसको position किया था तो ये यहाँ पे आ गया. Okay, it has moved to the right side of this. Now what I will do is hide, इसका height थोड़ा सा increase कर दे क्या? We can do that. We will increase the height of this, let's say 20 pixels. Okay, दो नहीं, हाँ, decrease हो गया and it might work for us. Let's see. And apart from this, let me check. ये जो div है, this is inside this box. Yeah, correct. Works for me. Now, what I'll do is I will also position it relatively. तो अब क्या होगा कि ये जो इसका div था वो absolutely position है. अब ये relatively अपने parent div के हिसाब से position होगा. I will give it a थोड़ा सा नीचे push करता हूँ, तो 3-4 पिक्सल नीचे push करके देखता हूँ. So this comes in line with this. So I think this is not going to override now this icon. So 3-4 pixel नीचे and right
मैं भी थोड़ा सा एलिमेंट डाल देता हूँ, लेट्स से 5 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा राइट साइड पे भी मूव कर जाएगा। और z इंडेक्स डाल के देखिए क्या होता है। लेट मी जस्ट चेक। सो देयर इज नो मच डिफरेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ये बीच में ये घुस गया है मेरा, राइट बीच में ए टैग्स घुस गए हैं मेरे। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो कंटेनर है इसको हम लोग पोजीशन नीचे कर देंगे। तो माइक कंटेनर के बारे में तो हमने डिजाइन लिख लिया है, बट इसको थोड़ा सा सर्च बॉक्स पे जब हम होवर करते हैं, लेट्स से कंटेनर बटन्स पे टारगेट करते हैं। सो अब हम लोग कंटेनर बटन सर्च पे टारगेट करते हैं। बटन सर्च, द नेम हैज टू बी द वन दैट वी हैव यूज्ड, एंड उसको मेरे को नए लाइन में लाना है। सो आई विल मेक इट एज डिस्प्ले ऑफ ब्लॉक। I don't need it actually, but as you can see it is still there, and now I will have a margin। तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊंगा क्योंकि वो ऊपर घुस चुका है। So I will give it a margin of 15 pixels। Okay, so this whole container of button search has come down। अब आपको पता चलेगा कि जो मैंने डिफरेंट बटन सर्च दिया था उसका क्या फायदा है। अब इन दोनों को मेरे को बटन के शेप में स्टाइल करना है। नीचे आ गया है, थोड़ा एलिमेंट भी बेटर दिखने लगा है। सो आई यूज दिस, और इसके अंदर का जो बटन सर्च है, जितने भी बटन सर्च क्लास वाले हैं उनको टारगेट कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू गिव दिस मार्जिन वैल्यूज टू ईच वन ऑफ देम। लेट्स से टॉप एंड बॉटम को ऑटो दे दो, और लेफ्ट एंड राइट को 6 पिक्सल्स एंड 6 पिक्सल्स। सो इफ आई डू दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो वो बहुत माइन्यूटली चेंज हो रहा है। यू माइट नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट एक बॉर्डर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा ये। तो लेट्स पुट अ बॉर्डर। आई विल पुट अ वन सॉलिड, और वो ग्रेइश टिंट जो था जो कि हमने ऊपर यूज किया था, तो ये वाला यूज करते हैं। सो देयर इज अ वेरी फाइन बॉर्डर दैट माइट बी कमिंग इन फॉर, ओके ये नाम गलत है इसलिए यूज नहीं हो रहा है। तो नाम should be button search। So this is going to target this particular button search। So as you can see, it becomes a little bit better from the last one। अब इसमें हम थोड़ी पैडिंग डाल देते हैं। Okay, 1 pixel first। You see this becomes a little bit better, but ये बहुत ही ज़्यादा skewed है और उसके ऊपर आ चुका है। So what we will do is we will just make the padding better। maybe 8 pixels की padding टॉप एंड राइट में दे दें, 3 पिक्सल्स। तो कुछ तो अलाइन हो गया, ये कुछ तो काम चल रहा है इसमें। दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी आई गेस। नाउ इसको मैं क्या करने वाला हूं कि दिस डिस्प्ले इज गोइंग टू बी इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि दोनों को मेरे को एक लाइन पे लाना है। तो आई विल मेक इट एज इनलाइन ब्लॉक। तो जितना स्पेस है उसमें वो एक्चुअली एडजस्ट कर गया है। क्योंकि मेरा माइक इमेज इज फ्लोटेड टू राइट, इफ आई रिमूव दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, you see it comes over here, we can position it, और जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें ये दोनों बटन चले गए। तो अभी के लिए आप लोग के लिए भी मैं कुछ छोड़ दूंगा काम, ताकि आप लोग अगर क्यूरियस हो तो you can do this। now I will put a background color to this, and that color that Google uses is this F2 F2 F2। okay, very light color, hexadecimal color। तो ये थोड़ा Google के कलर जैसा हो गया। फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। लेट्स से आई विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज टू 11 पिक्सल्स। ओके, और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको। तो फॉन्ट वेट करके एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, कितना टाइम्स बोल्ड करना है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सो इफ आई डू दिस, यप, लुक्स मच बेटर। बस ये थोड़ा स्क्यूड है राइट हैंड साइड पे। और गूगल सर्च का जो बटन है
उस पर होवर कर रहे तो कुछ नहीं हो रहा है. तो अब होवर का पार्ट हैंडल करते हैं. ओके, होवर का पार्ट हैंडल करते हैं, या वी कैन लीव इट लाइक दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Let's what can we do now? Okay, क्या हमने गूगल सर्च को aref नहीं दिया था, href. Okay, that's why I'll provide this with a href link. All right, only I am feeling lucky is getting that because this has come out of this. Maybe I'll put a br tag over here. Let's see what happens. How does this change? Nothing changes. This is not going to work for me as of now. तो जो मैंने पोजीशनिंग की रही है माइक की वो एब्सोल्यूट है और बटन सर्च को डिस्प्ले ब्लॉक किया है. लेट मी डू वन थिंग. आई एम गोइंग टू डू समथिंग विच इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो आप लोग ये मत करना. तो ये जो div है इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ. If I use it like this and put my Google search over here, maybe this might work. And do the same thing for I'm feeling lucky. Or no, let's use this, put it inside here and put I'm feeling lucky inside this. And what will happen? Let's see. Let's check it out. Okay, still on the same line. This is something that we are not supposed to do ever. कि किसी भी inline tag के अंदर हम div tag use नहीं करते. Okay, so that is the biggest mistake you will ever do. But I am showing you the mistake right here live in this session so that you remember. तो अभी मैं ये mistake करता हूँ and let's target these elements and see how it works. तो हमने बटन सर्च पे तो काम कर लिया. लेट्स से इफ वी वांट टू मेक द फुटर्स, टेक्स्ट डेकोरेशन हटा सकते हैं एक्चुअली. सो टू मेक इट फील मोर लाइक अ गूगल बटन. तो जितना भी बटन सर्च क्लासेस हैं उसको टारगेट कर लेते हैं एंड उनका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज. आई थिंक वी हैव इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ दैट. यस, वी हैव डन दैट. फॉन्ट वेट भी सेम हमने 600 पिक्सेल्स दे दिया है. सो वी डोंट वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ दोस बटन सर्चेस. On the hovering part, so let's target the hovering part. So when we hover over it, that means when we bring the mouse over it, what I want to do is text decoration initially null kar dete and then we will target the hover part. All right, let me just leave it like this. Border border increase kar dete hain. Border bottom we will increase. थोड़ा सा मोटा हो जाएगा. We will see a kind of a style coming up. So let's just use it. See what happens. Yes, as you can see, there is a border bottom coming up on this. And what we will do is we will have another section of background colors. तो थोड़ा सा Google के colors ही use कर रहा हूँ. You can always find this. You will Google this. So you can find all the colors that Google is using. So these are the specific colors Google is using. So आप देख रहे हो Find और Google search में कितना difference हो गया. तो जब मैं hover कर रहा हूँ तो एक button सी feel आ रही है इसमें. Alright, ये जो Google search का button है उसको थोड़ा सा increase कर देते हैं. So this is my Google search button over here. Yes, this is the Google search button. And maybe I'll increase the width of this thing. Widow's name, width. And this width is going to be 90, maybe 90 pixels. Let's see. Yes, it is much better. और same चीज feeling lucky का भी कर देते हैं. Feeling lucky button.
So आप देख सकते हो कि कैसे हम टारगेट करते हैं. 105 pixels. So if I go here and see, looks much more like a button and everything. Okay, so this looks good, right? So how do you find it? How do you find this particular session, right? तो अब मैं ये इस पॉइंट पे आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक दिन में भी ज्यादा नहीं होता है. एंड दिस वाज अ फील ऑफ द क्लास. सो डू टेल मी नाउ, आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू गाइस. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमने कैसे टारगेट किया. वी लर्नड अ लॉट ऑफ स्टफ. सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? Do you feel that the basics and everything is good? How do you feel about the session? What is your response on the session over here, right? So you will be learning on the basis, because अभी हमने बहुत सारी चीजें इसलिए यूज की हैं to show you how things work. Okay, so you will get to know a lot more than this, and we will be having a lot of stuff at the end of it. So this is this is what a classroom looks like, and this is how we are going to build from a very small scratch to a session that we will create a full stack developer out of you, right? Okay guys, so what we will do is we will wind up the session right now. So we have Anurag here with us, and I'm going to stop the share right now. You have had a lot of information. डेमो भी देख लिया आप लोगों ने. और it is a good time that you understand how this course structure is going to work. So I'm going to stop the session, and thank you guys for Palak, I'm really sorry to interruption. Please go on. yeah. So thank you for attending this session, and we will be looking forward for the batches to start soon and make a full stack developer out of you. So thank you guys, and over to you, Anurag. Thank you so much. Just quickly, guys, can you help me out? How was the session? I might be looking a little weird because I recently got a haircut. Anyhow, managed to get it. Okay. Am I audible to everyone? Yes or no? Maybe if you can help me out. Okay. Cool. Thank you, Nidhi, Nandini, Neha, Harshit. Thank you, Anurag. Oh, so I'm talking Anurag to Anurag. Nice. Cool. So is that is your that real name, or you did by my name or something? Anurag. Cool. By the time you're typing. So thank you so much, guys, for coming up for attending the live session. I hope, oh, that's nice. So I hope you had an awesome session, and we were able to add values to your knowledge base, and we were able to demonstrate ourselves how we are delivering and how is your everything going to be looking like basically once you are into the part of the session. I'm sure a lot of you might already be aware of CipherSchools, a lot of you not. For those who who are not aware, I'll just brief. So we are one of the training partner at LPU, and we have planned more such awesome sessions for you guys to train you on these technologies. So in case I think we already have your names with us, so we'll be reaching you out to probably understand whether what is your plan for the upcoming session, the summer training program, and all those things. But apart from that, that's a different thing. So Abhi, we are not going to talk about on the course and everything. So recently we have planned to build a community जहाँ पे you will be informed, you guys all will be informed, where we are collecting all the people, all the students, and we are creating a community of tech people basically. Okay, and the people who are right now in the session, 10 of you guys will have a privilege to be into that community. That's only for that is being created by us only to help you out in learning. So that community is specifically for it's it's not more focused to like everyday teaching or something, but it's more than that. So we are planning a national level hackathon and all those stuff uh, in partnership with Hacker Earth or something. So we'll be coming soon, very soon live.
So उन सब चीज का information and much more than that, I don't want to disclose everything right now. We'll be telling you one by one, but वो एक ऐसी चीज है जहाँ पे you guys, whatever 8 to 10 people are there in the session, you guys will be added. Not everyone, those who have left, I'm really sorry, they won't be there, but those who are, they will be added. Now, another thing that I want you guys to spread a message across is to, that would be really great help for us. Probably if you just go out and, speak out about CipherSchools to your friends or something, and let us know if in case they are willing to look at they're willing to take a demonstration, or if you are able to convince that the demonstration was really nice and you were able to understand whatever was taught, that would be again help over there. I think the classes for the full stack is going to be starting somewhere in the second week of June itself. And this is how your live class is going to look like. Palash is going to be your instructor. एक क्लास में जितना पढ़ा सके हम, जितना हम पढ़ा सकें उतना हमने पढ़ाया. And probably we'll be starting from the very scratch when we are starting the fresh batch. जिसको कुछ भी नहीं आता, those who are going to start very fresh, no worries, you are going to be learning everything, all the छोटा से छोटा details जो भी होगा, you're going to be learning everything. Okay, apart from the live experience, what if live class के बाद अगर आपको doubt आता है, so for that we have teaching assistant who's going to be in touch with you 24/7. चाहे आधी रात को आप मैसेज करोगे, he's going to be helping you out with the doubt. Okay, that is one thing. जो भी वीडियो, जो भी कंटेंट, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, that is going to be there with you for lifetime. And you know, and you will be able to access it जब भी चाहो. You know, just after your live classes, you're going to be getting the recordings of the same sessions as well. Apart from that, I think 4 to 5 projects are there which you will be building, combining the mini and the live project. And I'm not sure how many of you have attended the industry session, but that's one of my favorite session, where we call people from different industries, Google, Microsoft, Amazon. I think last we had conducted with LPU students, that was from Amazon session. Was anyone there out of you guys in that particular session? Yes, if you were, you can just help me out. Recently okay, Neha was there. Awesome. Saurabh was also there. Nandini was there. Oh, cool. So a lot of you were already there. Nice. Okay, cool. So I hope even that session was awesome. So that is something which we do on routine, and that is only for the internal students. Apart from that, you get lot, you know, 100 hours ka, this is going to be the 100 hours of your journey, 100 hours of live learning basically. And you're going to be getting soft skill, you're going to be getting aptitude, you're going to be getting projects, so many things. And you are going to be, when you complete the course, you're going to be the upper version of yourself. Maybe if it's Anurag, it's going to be maybe Anurag 2.0. Okay, something like that. So guys, if you want, probably you can block your seat by paying like 1,000 rupees for this thing. The batch that is starting will be, maybe, you know, that gives an understanding to us that yeah, you're going to be enrolling, or you can pay the full fees. Most welcome. And agar aap 1,000 fees pay kar rahe ho for booking up the seat, the remaining can be paid after you join. I mean, in the first week, jaise hi aap aate ho, when you start taking the class, the remaining can be paid then. And this is just a limited seat. We have been doing so many demos since morning that we are literally exhausted. Okay, and still we have a lot of demos planned for tomorrow for different other subjects. So I think we have artificial intelligence and interview preparation ka demo tomorrow. So if in case, if you have any friend of yours who are looking to attend the demos of interview prep or maybe AI ka demo, just nudge them out with the form that you might have received. Yeah, with the form jo aapne bhara hua hai, and ask them to join us tomorrow in those sessions and see how the AI and all those sessions looks like. Also, one last thing probably is a referral thing that we have. Okay, so referral ka kya scene hai? You refer a friend of yours
you get a 200 rupees off on the course price, and your friend gets 200 rupees off as well. Okay, so the more you refer, the more 200 rupees off both of you, each one of you gets. So in case if you are planning to probably have friends or something and you want to get into, just go ahead, tell them. Now that you have taken the experience, you can spread the messaging. And if in case if there's any doubt you want to ask me specifically related to anything, just feel free to drop it into the chat. Yeah, it's something like if you have more than 5 people, you're referring more than 5 people, you just have a straight 1,000 rupees off on the course. Okay. Any doubt? Yes or no? Yes or nice. Yes, no. What is Nandini for the no part? You can unmute yourself probably if you want to. Okay, cool. So thank you so much once again. Thank you so much for coming up. And it was lovely teaching you guys. And thank you so much for being an awesome audience. Cool. So I'm going to be ending the session now. And do spread words for CipherSchools. In case you liked, of course. Okay. Welcome, Nandini. Welcome, Divyanshu. Welcome, Neha. Welcome, Nidhi. Welcome, Harshit. Cool. So I'm ending the session once for all. Bye-bye. Take care. Huh?